Hello and welcome back to Chasing the Target. Match number 29, Sunrisers Hyderabad versus Chennai Super Kings. क्या बोल सकते हैं भाई. Lost by 7 wickets means Chennai won by 7 wickets against Sunrisers Hyderabad. Not the best of performances from the Orange Army. अफसोस की बात है कि we've lost back-to-back matches now. We really need to step up this game. मुंबई से भी घर पे हार गए and अब चेन्नई सुपर किंग्स से हार गए. Somewhere down the line में देख लिया था यार ये चीज होने वाली थी. I mean प्रीव्यू में भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि yes there is a big possibility because Chepauk का track spinning है and we have inexperienced people in the team. Please respect that as well. बच्चे है भाई हमारे पास, किसी के बच्चे उन लोगों का करियर बढ़ना है आगे, तो प्लीज ज्यादा भी उनको क्या बोलते बैंटर नको करो because it wasn't a very good performance honestly. अगर अपन देख रहे from the beginning Harry Brook power play में चले गया, उसके बाद Abhishek Sharma was stepping up a bit. He did score decent enough, ready for my abundant part. कुछ नहीं कर पाया and then ultimately the best of performances from Sunrisers. भाई धोनी अलग ही मास्टर क्लास लेवल पे. विकेट कीपिंग is still one of the best guy, is the best wicket keeper possible in the IPL. If there was anyone else right now in that IPL tournament जो ये विकेट्स के पीछे रहता या तो छोड़ देता या वो रन आउट नहीं कर पाता कुछ तो, बट ये बंदा की बात ही अलग है यार. एक विकेट के पीछे जो मुस्तफा was very scared of was that Dhoni behind the wickets and controlling the game is going to change the game, and that's exactly what happened. He got the stumping of Mayank Agarwal. He got the run out as well. I mean, the run out doesn't cost us that much, but I mean, in the fact that when Dhoni is on the ground, he controls everything. He is the Don, Mafia, Godfather, जो भी बोल दो off cricket, and yeah, he definitely. डेविन कॉनवे भाई नेक्स्ट लेवल फॉर्म में था. मार्को यानसन को जो फोड़ा 20 रन्स, मजा नहीं आया देखने में. एवरी टाइम खाली मुंडी पीछे की तरफ ही जा रही थी. बाउंड्री ऑल इन द बैक टू द थर्ड लेग एंड फाइन लेग एंड थर्ड मैन की बाउंड्री के पीछे एज 4 गया, 6 गया, 4 गया, 4 गया एंड yeah, that's what accelerated their chase. No intent from the Sunrisers as well. मेरे को वो भी अच्छा नहीं दिख रहा था कि थोड़ा intensity, थोड़ी fielding, थोड़ी aggression, कुछ तो भी just try man. I know 134 is not a big target, 135 not a big target, but you still work with what you have and sort of try to achieve something just by mental intent. Maybe just be a stronger psychological warfare. कुछ तो भी कर भाई, लेकिन विकेट तो ले भाई, कुछ तो कर भाई. लेकिन unfortunately क्या ही कर सकते हैं. We have last match winner Mumbai Indians versus Hyderabad के पंटर भाई says hello, and yes that hello के साथ एक इतनी चिल्लर स्माइल है उनके मुंह पे. मेरे को मालूम है एक अलग ही उनके दांत दिख रहे वो स्माइल में. मेरे को यहाँ से बैठे बैठे स्माइल दिख रहे. IPL is back is crying. भाई अंदर सभी रो रहे हैं, हम सब हैदराबादियां रो रहे हैं. लेकिन अगेन नेवर गिव अप मेंटालिटी है. क्या ही बोल सकते हो. ऑन टू द नेक्स्ट वन बोलना पड़ेगा. वी मूव टू द नेक्स्ट वन, वी मूव स्ट्रॉन्गर, वी मूव आई मीन स्ट्रॉन्गर तो नहीं, अभी वीकर है बट स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे इंशाल्लाह. आंखों से हटो यामा चश्मा हटाओ, हाथों यामा चश्मा, आंखें तो मिलाओ जी जरा. SRH वाले कितना भी हारे तुम ईद मनाओ जी. अरे भाई मैं कुछ भी बोल दो आशीष भाई, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद beat the Punjab Kings बोलूंगा at the end of the day ना man. I mean, it was a pathetic match, man. The more I'm thinking about it, the more it's annoying me. I mean, I'm not even lying. It like चिराग भाई नीचे बोल रहे कि boring match है. I agree with you, man. 134 should be chased out faster. What was Chennai Super Kings doing there? इतना बुरा खींच दिया अरुणा. Discipline bowling करे भाई बच्चे हमारे भी, no doubt. Markande and all of these guys, they were pretty much all right with the ball. They bowled it in the right areas, didn't give a lot of extras as well. No wides. I think that's the first time in an IPL match, I think this year, that no one gave a wide. So we are making records even in the losses में. हम कुछ तो भी record बना ले रहे हैं. बट या मार्को यानसन को तो फोड़ के रख दिए थे. मयंक टाइगर थोड़ा विराट कोहली ने दिखा आप लोगों को. मुस्तफा was saying कि मयंक टाइगर बहुत ज्यादा विराट कोहली के वैसा दिख रहा था. SRH की हालत खराब हो गई है और उनके साथ हमारी भी खराब हो गई है भाई. डिफेंड करते कर दे. अब बैक टू बैक हारने के बाद लोग और चढ़ के आ रहे कि भाई तुम लोग ये टीम को बहुत बड़ा डिफेंड कर रहे थे, तुम लोग बहुत ये टीम को चढ़ा दिए थे. पॉइंट है कि हम चढ़ा नहीं रहे टीम को. देख भाई आप भी देखे इन मैचेस वेयर वी वन कन्विंसिंगली. लेट इट बी द पंजाब गेम, वी वर कन्विंसिंग. आई नो राजस्थान से हार गए थे हम लोग, मुंबई से हार गए, बट देयर ऑल बीन क्लोज एनकाउंटर्स एंड वी वन एट ईडन गार्डन्स व्हिच वाज अ पॉजिटिव ना. तो मेरे हिसाब से देख भाई बच्चे हैं पूरे टीम में. एडन मार्के में फिनोमिनल कैप्टन. They just need the right mix of players. They just need a little bit more, probably a little bit more star power, maybe, if I'm not wrong in saying that. Mayank Agarwal नहीं फायर कर रहा. अभिषेक शर्मा
is good, but again, he's not in the likes of Devin Conway who can come in win you a game, or Ruturaj Gaikwad that can come in win you a game. आप वो चेन्नई की बैटिंग देखो यार, नेक्स्ट लेवल है यार वो. तो yeah, I mean हालत तो खराब हो गई है. Last phase of my career said by Dhoni, so it means this is the last IPL. I mean, phase is a bigger word, Vinesh, by if I'm being honest, but you never know. Yeah, man, it could be his last year if he wins it. I think if he wins it, it's his last win. But if he loses, maybe it's just gonna be his last one more last dance next year, maybe. But yeah, I think it's just gonna be. It's gonna be sad, यार, because what Dhoni, even from an opposition's perspective, जो धोनी लेके आता भाई मोमेंटम गेम में, जो ने खाली फील्ड पे आया तो एक अलग एक्साइटमेंट रहती. आज भी मैं आई एम इन हैदराबाद राइट नाउ, सो इन अराउंड कितने लोग धोनी की टी शर्ट आप पहने, तो यू कैन सी द इम्पैक्ट उसका जो है यार. उन्हें उन्हें दुश्मन को भी दोस्त बना लेता, ऐसी चीज है उन्हें. तो आई मीन यस, विराट कोहली भी है टू एन एक्ट, बट नॉट टू दैट धोनी लेवल. आई थिंक धोनी वो रिगार्ड में भाई, आप लखनऊ चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, धोनी इज नेक्स्ट लेवल मैन. दिस गाय इज फैन फॉलोइंग समथिंग एल्स. जड्डू के डर से हार गए एसआरएच वाला, और मेरा फैंटेसी पिक था जड्डू, मैं बोल के रख दिया था, यू नो जड्डू इज गोइंग टू kill it today, and he did, man. And जड्डू, ये सिचुएशन में जडेजा बहुत जबरदस्त रहता है, जहाँ पे आपको इकोनॉमी होना और आपको विकेट्स भी होना. दो तीन विकेट ले लिया उन्हें, स्टंपिंग तो बेहतरीन थी वो, धोनी. उसके अलावा उन्हें अभिषेक शर्मा को लिया जो जबरदस्त कर रहा था. नॉट द बेस्ट ऑफ शॉट फ्रॉम अभिषेक शर्मा, बट अ वेरी गुड कैच फ्रॉम रहाणे एज वेल. Then the next wicket that he took was Rahul Tripathi. Rahul Tripathi तो बहुत कीला भैया, बहुत कीला यार. और राहुल त्रिपाठी हग हग के मारा यार, इतना स्लो खेला. I don't know what's wrong with him. Should have played Rashid. Yeah, and I thought they would do that, but again, you have such limited options with Akil Hussain, Marco Jansen, and Adil Rashid. Now the thing is, Pandra, you've got to be open to risks, which you should actually with this kind of team. Now you probably sit down a 100 class and maybe you get some Indian wicket keeper. I think Mayank Agarwal can wicket keep, or someone can wicket keep, and just try and getting that foreign play rule. Play according to the situation. I mean, if even if Harry Brook is not fitting into the system, don't, like, if he's not going to be able to smash it. Though Harry Brook didn't even face like spinners properly today. He got out to, I think, Tushar Deshpande today. So that was what was sad. Akash Singh. So that was what I was sad about. Like, he didn't even play spin and get out. He got out on a fast bowler. So you really, I mean, obviously you can't sit these guys down the price tag that he has. But I'm just saying now, you just have very little room to experiment with your team. We still haven't seen Vivrant Singh, an Indian guy. We still haven't seen like Sanveer Singh. So many people in that Sunrisers dugout probably are eager to show what they are. But you'd have very little room to experiment, and I understand where Brian Lara is also coming from. Like, it's hard. Like, when you're playing Chennai, किसको निकालेंगे बॉस? अब आदिल रशीद को खिलाने के चक्कर में आप किसको बिठाएंगे? आप ना मार्को यानसन को बिठा सकते. ही इज नॉट डन दैट. कुछ गलतियां नहीं करा. यू कांट सिट डाउन 100 क्लास. उन्होंने भी कुछ गलती नहीं करा. हैरी ब्रुक 100 मारा हुआ है, द ओनली गाय दिस आईपीएल लाइक 100 मारा. सो and then you have the captain. So none of these guys are going to sit. So it's such a solid foreign policy here that it's getting a little bit hard to adjust. आशीष भाई, आई डोंट इवन फील लाइक स्लेजिंग एसआरएच फैंस नाउ. हो गया मेरे तरफ से, पंजाब को हराया, वही तुम्हारा हाईलाइट है सीजन का. एग्जैक्टली ब्रो. बट कल आपका भी हाईलाइट दिखेगा भाई. कल आपका भी मैच है, याद रखो. हर आदमी का दिन आता भाई. आप आरसीबी से भी हार गए आप तो, एंड अब आपका भी टाइम आ रहा करीब. सो आई नो आई एम नॉट गोइंग टू स्लेज यू एज वेल, बिकॉज़ वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगा. दोनों हार रहे हैं, दोनों साथ जाएंगे नीचे, दोनों साथ आएंगे ऊपर. वैसा सिचुएशन चल रहा अभी, आई थिंक हैदराबाद एंड पंजाब का. बढ़िया. पंजाब प्ले मुंबई इंडियंस टुमारो, आई थिंक एट मुंबई. तो मजा आने वाला वो मैच देखने में कि क्या होगा. वहां खेड़े पे बैटिंग ट्रैक अच्छी है, पंजाब एक्चुअली हैव अ डिसेंट शॉट एट. बट या अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी पंजाब हैदराबाद पूरों की लगे हुए हैं यार पिंडे में. टेबल में तो हम लोग नीचे चले आ रहे हैं. दिल्ली कैपिटल्स अगर आके हमारे को खुदा ना खास्ता हरा दिए तो then they'll go climb on top of us. But their run rate is also very bad. So it was Chennai. Chennai actually had a very good opportunity to rise up at least to second, but उनला इतने स्लो खेले. आई थिंक आइडियली 10th या 12th ओवर में खत्म कर देना था. उनला इतना स्लो खेले कि नेट रन रेट पे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, जिसकी वजह से अभी भी उनला 30 है. they were going at a good speed. I think क्या 10 ओवर में 87 थे वो लोग, 11 ओवर में 87 थे. could have finished it quicker, but they just took their sweet time. और खींचते गए. आई थिंक वो हर ओवर ऐसा लग रहा था कि किसी को आप मार के पीट के उसको घसीटते ना, वो हर एक ओवर ऐसा लग रहा था कि एसआरएच की लाश घसीट रहे साथ में. इतना दर्द हो रहा था बकुल मुस्तफा के, इतना दर्द हो रहा था मैच देखने में. बट देखना तो पड़ा भाई मैच. व्हाट कैन यू डू? यू हैव टू वॉच योर मैच, यू हैव टू बैक योर टीम.
And I mean, these are probably early lessons, hopefully, for Sunrisers. Ab Delhi ke against, they might come much more prepared. Hopefully, we get tickets for the match. Hopefully, we get to go to the match. But it should be a fun one to watch. Delhi also not in the best of forms, but Delhi won. Warner coming back to Hyderabad. That's something I'm looking forward to. A lot of Hyderabad fans are looking forward for Warner's return, what he's going to do. It is a scary thing, but dekhte hain, I mean, what's in store for Delhi Capitals versus Hyderabad. क्या फिर भाई यानसेन को खिलाए लेकिन राशिद को नहीं, स्लो पेसर्स पर ब्रोकन क्लासन से किसी या कर सकते नहीं शिवा, दैट्स द थिंग, लाइक अगर आप उनको ड्रॉप करें और अगर राशिद भाई पिट गए या आदिल रशीद पिट गया या कुछ हो गया, so there's always going to be that questions कि आपका 18 करोड़ का एसेट आप ब्रुक को कहीं को बिठा दिए, क्लासन को बिठा के आप किसको विकेट कीपिंग कराएंगे. अब जो विकेट कीपिंग करने वाला है अनमोल प्रीत है, जो he left a lot of wides in the back. You don't trust him in the wicketing. I don't know if Mayank Agarwal is keeping or can he keep. I'm not even sure. So there's a lot of ifs and buts that will go ahead, and जीते तो वाह वाह होती थी, हारे तो then always अरे इसको कहीं को बिठाए, ब्रुक एंड क्लासन को कैसे बिठाते, आरों ने सेंचुरी मारा उन्हें. So it's always going to be a hard call to make for a coach. कभी कोई खुश नहीं रहेंगे. But yeah, today I agree कि भाई spinning track है, आपको मालूम था. You could have taken that risk. At least यानसेन को तो बिठाना था, क्योंकि उन्हें 20 रन मार के 20 रन दिया यार ओवर में. डेवन कॉनवे smashing it. बहुत जबरदस्त प्लेयर है यार उन्हें. Mr. 360 यार उन्हें मेरे लिए. He can play anywhere. Regardless, man, this guy's a beast right now. मैच में एक ही मसला था, जद्दू वर्सेस क्लासन. Yeah, man, that was fun to watch. And I mean, also जद्दू की बहुत अच्छी थी यार, आज देखने में बहुत मजा आया मेरे को. It was like it was good. It was classic Jadeja stopping the runs, and then you get to see a Dhoni stumping on his bowling as well. So it was something else to watch. Spin to win in Chennai as the games progress. All pitches will be helpful. Yeah, they will wear and tear, of course. Ashish, you're right. KKR in today as CSK का game defend करना अब possible होगा, no due factor. And yeah, I agree to that. It's going to be more conducive to spin, and we're just going to see a lot. But then that's the thing. How do you balance your squad, man? When you have Umran Malik and these guys, how do you sit these guys out? How do you balance your foreigners? How do you do all of these things? So Brian Lara really needs to understand. Maybe maybe impact rule के अंदर कुछ और और scrutinize करो, और investigate करो. How maybe you bring like you bring in Washington Sundar as a batsman or a bowler, something you have to try something. I don't know. Samad is also there. Samad can also bowl and bat. क्या करते हैं यार, मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है अब. बट या एंड दिल्ली इज स्केयरिंग मी वेरी ऑनेस्टली. आई एम नॉट गोना लाई. मैं यहाँ पे बैठ के उनको तो डर लग रहा भी दिल्ली के. वेल दे हैव कुलदीप. आई मीन हैदराबाद में भी मैच अगर हैदराबाद की पिच ऐसी है, यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन ऑन दैट पिच. It's the bounce might be low, and sometimes the bounce there might be a little bounce, there might be a little swing. And they've got North here. They've got how are you going to pay 150 in Hyderabad apart from probably Harry Brook, Aiden Markram, right? Like I don't see these guys thing. And then they have Akshar Patel, they have Kuldeep Yadav who's coming in good form. तो हैदराबाद का भी पिच थोड़ा ऑन एंड ऑफ चल रहा. वी लॉस्ट ऑलरेडी एट होम टू राजस्थान रॉयल्स. तो मेरे को तो देखेंगे. आई मीन इट इज अ गुड स्क्वाड, बट दे नीड टाइम. दैट्स ऑल आई कैन से. हैदराबाद नीड्स टाइम राइट नाउ. त्रिपाठी सुला देता है मेरे को क्रीज पे. इतना ट्रिगर मूवमेंट है इसका. ऐसा लगता है उन्हें हर बॉल या तो उन्हें छिक्का मारेगा या चौवा मारेगा, लेकिन उन्हें आके खाली टुक टुक खेलता. एंड I mean, yes, the 81, if I'm not wrong, if he made was amazing. I mean, उन्हें मार सकता है यार. The thing is too hesitant. उन्हें बहुत अपने आप को restrict करके रख रहा है. ऐसा लग रहा उसको एक तरीके में खेलना चाह रहा उन्हें, but he's not able to figure out what's the best way to play for him is what I feel like. You see the innings that he plays mind free, carefree. लगी तो चली, नहीं तो मोहम्मद अली टाइप मसला है यार उसका. लगी तो चांद तक, नहीं लगी तो शाम तक. इफ यू वरना एज होके आउट हो जाता, स्लो हो जाता. अगर फास्ट खेल रहा तो भी there's always that risk, but स्लो खेल रहा तो इतना स्लो खेल रहा था because he's not used to playing that way. I think Rahul Tripathi just play how he feels is right and just leave it on that. But the only thing is like Harry Brook out हो जाता, इन्हें आउट हो जाता, फिर pressure build हो जाता था. I think वो भी सोच रहा है he's putting a price on his wicket because he wants to stay in the team as well. So there's a lot of problems with him as well. No team chemistry for Sunrisers, man. ये नहीं है boss. Like I mean है, आप देख लो Eden Gardens में, अगर आप देखो there was chemistry. आप second match भी देख लो, अपन जो जीते थे किसके against जीते थे यारो. The one we lost after Rajasthan, and then back to back we lost the third match. लखनऊ से हारे थे, फिर I think अपन पंजाब से जो जीते. There is team chemistry. It's just there's no. I mean, the leader is there in Aiden Markram, but there's no activeness. There's no intent. That intent has to kick in into everyone has to take responsibility. That's the only thing I feel. As of now, it's only a few people like Hendrik Klaasen, Harry Brook, Aiden Markram, maybe Abhishek Sharma now, I'd say. In the bowlers, probably Bhuvaneshwar is taking. I mean, he's getting smashed, but he's still taking mark.
You need a collective unit, man. You need diving. You see, Chennai were not doing good in the field, and आज देख लो भाई ना fielding में क्या जबरदस्त डाले, bowling में क्या सही कर दिया सबका tempo. He said, I don't want wides, and this is going to be the last time. Or you play under another captain. दो वाइड डाले आज खाली, and वो भी I think तुषार देशपांडे ही डाला एक उसमें. So, but that's how you get your team to sort of focus, sort of point out their mistakes, sort of take them back to. I'm not saying they're not doing it, but they're not even trying to. They're not showing signs of improvement. It is going to take some time. I'm again, they're young kids. They're not going to understand the IPL in one season. This is expected, but they're a good क्या बोलते unit. अच्छी unit है, बस आदत होना IPL में कैसा खेलने की and stuff like that. So it's gonna take some time, but I just hope early hiccups and अब जाके कोई streak लगना, बस एक winning streak लगी तो then Sunrisers will get that. They need a belief back. जो belief पंजाब में फिर कोलकाता में पकड़े थे, they need that belief factor back, and then yeah, next two matches are crucial. Lose one, and yeah, 100%. Then Delhi match is, especially scaring me, Smack, because Warner is coming back. You know how what he is able to do in the Rajiv Gandhi age. He's done it 100 times for us. And yeah, Kuldeep, other players that I mentioned, Kuldeep Yadav, maybe Prithvi Shaw might smash it, man. And they all come to form against us, right? You saw Andre Russell also hit a bit against us. So it's going to be fine. And again, I think our next match is against Delhi Capitals on Monday. And the other match, I think, again is on with Delhi Capitals, but it's the away leg in Delhi. So that's also funny that we're going to play Delhi again twice in a row, right? So yeah, it's going to be the same team back to back, and they're both crucial right now. Venkatesh Iyer also scored a century. Yeah, Venkatesh Iyer, मैं भूल गया था उन्हें 104 मारा तो चला दिया था उन्हें, but yeah, against Mumbai, I think if I'm not wrong, but yeah, Venkatesh Iyer also smashed 104. अभी अच्छा है दिलाई Ibrahim by the stat attack guy. But yeah, I mean, overall Hyderabad has to really perk up. Bowling रन दो, बैटिंग है यार, वो बैटिंग से कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रही. बॉलिंग भी आप रन्स दिए तो बॉलर भी कुछ करेंगे, नो डाउट. मरकंडे हैज बीन समथिंग ऑफ क्या बोलते, लिटिल बिट ऑफ रे ऑफ सनशाइन, रे ऑफ होप इन दैट डार्क कैंप. उन्हें अच्छा डाला यार, उसको कुछ भी नहीं बोल सकते अपन. उन्हें उसके पिच के हिसाब से डाला. ही गॉट हिज 2 wickets and he's a happy guy. But again, you should have played Adil Rashid. You should have played according to the conditions of the pitch. And आप just क्या तो भी टीम बना लिए थे, क्या तो भी कर लिया. It's a sad side यार. मैं honestly बहुत irritated हूँ अभी because नहीं यार, मजा नहीं आया आज के मैच में मेरे को तो बिल्कुल भी. DC could be playing an old SRH boy Priyank Garg who has replaced Nagarkoti. Okay, Nagarkoti is injured. I didn't read that. I think Nagarkoti is injured, or did he just drop out due to some personal reasons? But let us know, Ibrahim, if not like that. I remember Priyam Garg. उन्हें एक मैच जिताया था, उसको क्या चढ़ा दिए थे यार Priyam Garg को. I remember that very well. Don't underestimate DC. They have a good squad. They might pick up momentum. Yeah, and I'm not at all Nitish bhai. Like honestly, DC is scaring me. Like I'm saying, Chennai was scaring a lot of Chennai का तो देखो भाई. I'll be very honest. We all knew it was coming. I mean, whoever supports Sunrisers or whoever don't support Sunrisers, because Chepauk में है, turning wicket है. We've seen Harry Brooks struggle. We've seen them struggle connect ball to bat. All the Sunrisers team, Abdul Samad le lo, aap Mayank Agarwal le lo. Aiden Markram also, I mean, he's not been in the best. I mean, he's hit that quick 50 that we saw, but after that, he's not been in the best of form. So the batting wise, we've been collapsing too much. And it's not been a great side with the bat. Bowlers फिर भी कुछ कर ले सकते हैं, लेकिन उनको कुछ टोटल ला के दिए तो ना करेंगे बस. लाइक अगर आप ऐसे 132 दिए तो नहीं कर सकते हैं. मुंबई इंडियंस के भी अगेंस्ट 192 था, ऑलमोस्ट भी गेम है, बट खुद की गलतियों से अपन हार गए. Let it be Klassen getting out, let it be Mayank Agarwal not connecting, Samad eating a lot of balls. So I mean, these are mistakes that you can't make, but the overall batting has been a poorer for me right now. Bowlers are doing good, and it's not just like one guy stepping up. Also, okay, every match at least for RCB, आप देख लो, at least someone is watching, someone is standing up. Let it be Faf, let it be Kohli. At least these two are consistently standing for SRH. You don't see that. You see 18 runs from Harry Brook, 12 runs from Harry Brook in one match, then 100, right? Similarly, Mayank Agarwal slow. उसके बाद फाफ बोल रहा हूँ मैं, एडन मार्कम एक बार मारा, उसके बाद नहीं मारा. अभिषेक शर्मा थोड़ा बहुत बेटर दिख रहा मेरे को. He's got back to back a bit of runs, but it's just you need consistency from everybody. It's not going to just be that, and that's what they'll have to work on. मार्करम ने आज अच्छी कैप्टनसी नहीं करी अच्छी कैप्टनसी. आई थिंक कैप्टनसी के क्या मतलब कर क्या सकते, लाइक प्लेयर भी परफॉर्म नहीं कर रहे यार, टू बी ऑनेस्ट. तो कैप्टनसी या आई मीन बॉलिंग चेंजेस नहीं करे, लाइक जो चेंजेस करना चाहिए था उसका पिच के हिसाब से वो नहीं करे. आई एग्री विद दैट गज्जू भाई, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक जो भी आपको लाके दिए बैट्समैन भी कुछ उतना ग्रेट कर नहीं पाए. तो इट्स अ कलेक्टिव थिंग मैन. आई थिंक यू कांट ब्लेम एनीवन
individually. But yeah, I do blame the batsmen more than the bowlers at this point of time. And yeah, hopefully they come back stronger because yeah, अगर आप spinners को लेते थे मरकंडे जबरदस्त था. Umran didn't bowl bad. Umran bowled 3 overs 18 runs जिसको आप ड्रॉप करें last match. Washington के अंदर सिर्फ 3 ओवर ऑलमोस्ट 3 ओवर डाला, बट फिर भी आप चेन्नई जैसी टीम को आप 19 ओवर तक खींच के लाए. इट्स अ बिग डील फॉर मी, given the fact आपकी 135 की total है. So I think that's commendable. I would pick out one positive from Hyderabad. I know it's not a big positive. I know they're like maybe Chennai also took it easy on themselves, but it is a positive कि आप 135 के टोटल को भी आप 19 तक लेके आए, डिसिप्लिन बॉलिंग करे, आप एक वाइड नहीं डाले, आप अच्छा था. I still enjoyed it, but yeah, Marco Jansen was the only decision that I felt. Adil Rashid रहता था, would that have been a big differential factor? Maybe not, obviously, because the total was not there, but कुछ तो कर सकते हैं. Markham himself bowled and got smashed 1 over. It's always going to be ifs and buts, but for now, I just think that the batting really needs to look up and beyond. And I think yeah, Harry Brook and Abhishek Sharma ka jo combination hai, I'm liking that a little bit more. To be honest, agar Harry Brook started firing today, maybe you could have seen something else because Abhishek Sharma was decent, right? He didn't bat worst, to nahi bat kara, acha tha. So it was a good flavor to see Abhishek Sharma and Harry Brook, and that left-right combination always going to be a different factor. Phil, I don't want to rub salt because you are an SRH fan, but I failed to empathetic considering as I didn't play Rashid. Yeah, I mean, we discussed this also, Nitish bhai, in the preview, and I agreed with you, right? Akil Hussain was also there, Rashid was also there. So I completely understand where you're coming from, and I'm not saying that you're wrong. I'm just saying, like, even if Marco is bowling, Marco could have bowled in the right areas much better, but it was given, boss. Like, it's a spinning track. You have to play Akil Hussain or Adil Rashid, but and you already had Umran Malik and Bhuvaneshwar Kumar in the fast bowling department, so you really didn't need to go with 3-5. But the only thing is, where would you get an extra batsman from, right? I know Akil Hussain can bat as well. So yeah, I think that's the only call that I'm also upset about, and it's not like rubbing salt. It's just a general discussion. I agree to that point 100% that Akil Hussain or Adil Rashid would have been a better fit in today's match. Or maybe you do something like an impact player, get someone to bowl leg spin. I don't know. You just do something different, man. Think behind, outside the box, something. But yeah, Brian Lara was never a rated good captain in his era. I don't know why he got the coaching role. I mean, experience hai boss usko. He's been in and around the camp. He's been in and around the circuit. He's a legend, man. I see Brian Lara coaching का भी कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते. Obviously, we'll need to know a bit 2 more games here. We'll come to know कि भाई situation क्या. See, we've seen Kolkata Knight Riders के against भी temperament. We've seen Punjab Kings के against भी equipment. But overall, it's the team as well who's on the pitch that needs to perform. Brian Lara cannot teach a player how to connect the ball to the bat, like in the case of Mayank Agarwal or Abdul Samad, right? These guys are cricketers and they're playing cricket since the age of 10 or 8. उतना तो basic तो कोई भी किसको भी मालूम boss. It's just the lineup, maybe the changes, maybe the intent. ये सब चीजें सिखा सकते हैं. You can how to be more aggressive on the pitch, how to conduct yourself on the pitch. I get that, but these basic things are like messed up. Like, how can you teach someone how to connect a ball to a bat? It's just I think Agarwal was upset about batting at 6 and threw it. I mean, he didn't throw his wicket. I mean, Dhoni just smashed the wicket like next level, and he had nothing to play for. Like you said, I don't care, man. Like, I felt Abhishek Sharma was much better than him in the opening hours of the game, and I would really go again with Harry Brook and what's his name, Abhishek Sharma at any cost. I think I liked that duo, and it was much better. It was a good kicking start, Tharo, and I think they should continue again with the Delhi game. Nagarkoti has a back injury, all right. Okay, so Nagarkoti is not Priyam. Not that he played Bichara, but yeah, Priyam Garg. And yeah, so all in all, अभी Delhi Capitals की भी team आप देखो, Warner, Shaw, Phil Salt. I mean, he got caught in bold, but Mitch Marsh का डर नहीं लग रहा. बट वही है ना, हैदराबाद इतनी अच्छी टीम है कि सब उसके अगेंस्ट खेलने के लिए रेडी रहते हैं. एंड लाइक यू कैन सी पीपल कमिंग बैक टू फॉर्म पकड़ लेते हैं, ये कर लेते हैं हैदराबाद के अगेंस्ट. सो आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी गुड मैच, माइंड यू. बट टुडे वाज जस्ट डिस्गस्टिंग ऑनेस्टली. मेरे को तो चिढ़ आ रही है हैदराबाद के बार मैच सोच के, because we need to bat well, we need to get beyond 160-70, we need to start scaring people with batting. Our batting looks too easy, vulnerable. अगर हैरी ब्रुक आउट हो गया, एडन मार्करम ने खत्म है. क्लास ना के जल्दी एक 20 मार लेता, उसके बाद कोई नहीं है बॉस. Like, we have no one. Washington Sundar also is so good with the bat, but he's also throwing his wickets. I mean, he came in the last today, but generally, we can, if you want, we can have a good batting line, deep batting depth है हमारे पास, but वो utilize नहीं कर रहे. We don't have
people who are standing at the wicket, putting a price on their wicket, playing with responsibility. They're just coming and throwing their weight, like Rahul Tripathi, Mayank Agarwal, just being a little bit taking too much time of the summer, taking too much time. You need people to put a price on the wicket, play with a bit more responsibility. थोड़ी जिम्मेदारी लो यार, और थोड़ा जीतने का एक जज्बा रहना, थोड़ा बहुत एक इंटेंट है, die for every ball, shout at each other, back each other, but वो तो इंटेंट नहीं दिख रहा. Overall, खैर अभी तो हैदराबाद 9th पे है with 4 points, and yeah, Chennai is still on third because they played ultra slow and net run rate कोई कुछ change नहीं हुआ. They're just 0.355. Lucknow Super Giants are playing tomorrow against the Gujarat Titans. अच्छा मैच है ये तो, because yeah, it's going to be KL Rahul versus Hardik Pandya, and रात में है Mumbai Indians versus Punjab Kings. Again, it's going to be a good contest to see, because Mumbai Indians अगर ये जीती तो उनला भी 8 point पे आ जाते हैं. लखनऊ अगर ये हारी तो उनला I think table drop करके third या एक्चुअली गुजरात भी चढ़ जा सकती है. सो या गुजरात, इफ दे विन टुमारो, दे विल बी 8 points. अब वो नेट रन रेट पे आ जाएगा सिचुएशन, बट इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग. अगर मुंबई एंड गुजरात कल जीत गई तो उनला भी 8 points पे आ जाएंगे. सो इट्स गोना बी टक्कर का मुकाबला ऑन दैट टॉप ऑफ द टेबल, जो इसके बारे में हम कल बात करेंगे ऑब्वियसली. आई थिंक अग्रवाल, ये तो हो गया. ब्रुक्स का एक सेंचुरी करके हो गया नहीं बॉस. अभी देखो बॉस, चिराग भाई, ब्रुक्स का एक सेंचुरी करके नहीं. टुडे तो ही वाज आउट इन अ वेरी वियर्ड फैशन. ऑब्वियसली he got out, and मेरे हिसाब से आई थिंक ब्रुक्स का खत्म नहीं हुआ. ही इज जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉब्ली द कंडीशंस कंप्लीटली, किधर कैसा मारना. ही हैज द टैलेंट, यू सीन, ही हैज द शॉट्स. उन्हें अगर फास्ट बॉलर ना दिए तो उन्हें लग देता है यार, उन्हें किसको भी. एट एनी गिवन ही इज द ओनली वन हु विल गोना प्ले इन द दिल्ली मैच अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया आई थिंक राइट नाउ. एडन मार्कम भी खेल सकता है, क्लासन भी खेल सकता है, बट इंडियन जो हमारे बैट्समैन है, आई डोंट थिंक दे आर दैट केपेबल ऑफ प्लेइंग 150. But you never know, obviously. But अभी ब्रुक्स आएगा यार, he will come back. He'll have another two innings I feel, और 2-3 innings तो है उसके, एटलीस्ट एक 50 तो रहेगी most probably. He's not done. It's just उसका first season है, 21 years old है. We fail to realize that he's 21 years old because he's achieved a lot already. New Zealand में सेंचुरी है, पाकिस्तान में सेंचुरी है, T20 में जाना माना है. तो we fail to understand that he's just 21. He needs a little bit time, but I think it's going to be interesting. हो गज्जू भाई fan है तो लखनऊ will win बोल रहे for Gujarat Titans. But अच्छा मैच है यार, I can't wait to see this match. लखनऊ सुपर जायंट्स एंड गुजरात टाइटंस, दोनों में जबरदस्त प्लेयर्स है. कायल मेल्स है, राशिद खान है, अच्छा बैटल है. अभी शनका भी है यार गुजरात टाइटंस में, मैं भूल ही गया. आई थिंक शनका भी था ना, ही केम इन प्लेस ऑफ इंजर्ड केन विलियमसन. सो देयर शनका, देयर्स I mean Shanaka won't play mostly, but yeah, it's good. All in all, Gurmal Alzari, Joseph, Mohammad Shami, Quinton de Kock might get to play his first match, or Stoinis might play. Actually, let's see what happens there. It's going to be fun to watch. Venues for IPL playoffs were announced today, 23rd May. Qualifier 1 Chennai, qualifier 24th May eliminated Chennai. 26th में क्वालिफायर टू अहमदाबाद एंड देन फाइनल. यार अरे भाई हैदराबाद में लाओ यार मैच. खैर वो पूरा गैंगस्टर एरियाज है भाई, वो एरियाज में आप हाथ नहीं डाल सकते. पूरे माफिया बैठे हुए चेन्नई अहमदाबाद में. सो यू कांट रियली, आई डोंट थिंक एनी अदर पिच विल गेट इट. ऑब्वियसली कैपेसिटी वाइज भी अगर अपन देख रहे, आई गेट अहमदाबाद, बट मे बी यू कैड हैव केप्ट इट इन ईडन गार्डन. आई थिंक दैट्स 60,000. चेपोक इट वाज 32,000, 35, 40,000. आई थिंक दैट्स अ स्मॉलर ग्राउंड. ये जगहों पे नहीं डालना यार. बट अगेन आई गेस वो भी है कि भाई पब्लिक आती दबा के यहाँ पे, दो स्टेडियमों पे पूरी फुल हो जाती. सो मे बी दैट्स वन ऑफ द रीजंस. एंड या आई मीन दैट्स, अहमदाबाद का तो मालूम था मेरे को फाइनल वहीं होने वाला है, बट आई डिडंट नो अबाउट द एलिमिनेटर इन द क्वालिफायर्स. बट अभी तो बहुत टाइम है उसके लिए, ऑलमोस्ट एक महीना है. अभी तो टेबल पे फोकस करेंगे. अभी तो अपन बहुत सारा, और अभी तो और जलील होना है बोलते हैं ना, अभी तो और जलील होना है. I don't think Salil hona hai. I'm confident in this Hyderabad team, man. I'm just a little bit down because Chennai बहुत irritate करती है यार. अभी they have 14 wins and Hyderabad has only 5 wins, 19 matches in total. अभी 14 मैच हरा दिया हम लोग को. And I've seen it live also, right? और मेरे को चिढ़ा रही because I know what Dhoni does and what this Chennai team does. They really suck the life out of you. But all in all, yeah, Hyderabad lost today, Chennai won today. Tomorrow is a double header. Day after tomorrow again is a double header. But कल का double header मजा आने वाला है because Mumbai is also coming back. अर्जुन तेंदुलकर को देखने ईगर हूं मैं क्या करता है. देखो लास्ट मैच में बहुत चढ़ा दिए थे अर्जुन तेंदुलकर को कि उन्हें ऐसा है वैसा है. या क्रेडिट देना चाहिए बॉस, आके उन्हें फाइनल. बट उन्हें किसको डाला, वेरी ऑनेस्ट, लेट्स बी रियलिस्टिक, किसको डाला उन्हें, राइट? नाउ आई वांट टू सी हिम if he's bowling to an let's say an पंजाब का like a सिकंदर रजा, like a लिविंगस्टन, like then we can say कि हाँ भाई
बट आप टेलेंडर को डाल के आप किराक बन जा रहे हैं अपने आप को, तो दैट इज समथिंग। बट या अगेन प्रेशर सिचुएशन है, नया पुट्टा है, दे देंगे, चलो कोई नहीं। एलिमिनेटर एंड क्वालिफायर इन चेन्नई सीएसके को फाइनल में लाने का फुल या वो आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, ऐसा मसला है वो। बट हैदराबाद पीछे नहीं आएंगी, हैदराबाद कम इन दैट क्वालिफायर एलिमिनेटर इंशाल्लाह। काव्या पनौती है एसआरएच के लिए, जब आती है मैचेस देखने एसआरएच हार जाती है। आई डोंट नो कौन पनौती है यारो, जो भी है पनौती निकालो उसको जो भी है, यू नो, पकौड़ी पनौती जो भी है बैगन, वी हैव टू विन मैन, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज, पनौती रहना तो। बट बैट बैट कैसा नहीं उठ रहा है यार, बैट बॉल को कैसा कनेक्ट नहीं कर रहे, यू नो, आप विकेट्स कैसा फेंक दे रहे, कोई बात नहीं, सिंगल रोटेट द स्ट्राइक, फाइंड योर लूज डिलीवरीज, यू नो, वो तो भी करो, रन क्विक वंस एंड टूज बिटवीन द विकेट्स। There's no good. I think Henrik Klassen is a fantastic runner between the wickets, but apart from that, running between the wickets has been poor as well for SRH. जो doesn't add pressure to the fielders or the bowlers, you know, आप जब 1-2s लेते रहते हो और वो हल्लू हल्लू छोटे छोटे आप यू नो मारते रहते डैगर, हाँ, तो मजा आता है देखने में मैच के। भाई बॉलर भी इरिटेट होता, फील्ड भी चेंज होती, तब आपके जाके बाउंड्रीज खुलते, वो भी नहीं कर रही यार हैदराबाद। सो आई थिंक रनिंग बिटवीन द विकेट्स हैज बीन अ लिटिल बिट पोर। दिल्ली का एसआरएच सेम हाल है, गुड प्लेयर हैं, चल नहीं रहे। फिर भी बॉस मैं बोलूंगा अंशुल भाई, दिल्ली के प्लेयर्स मच बेटर है हैदराबाद से, अगर आप कंपेयर करो ऑन पेपर बोलूंगा मैं एटलीस्ट। Delhi has a decent squad. They have Warner, Prithvi Shaw, Mitch Marsh, Phil Salt, Manish Pandey, Akshar Patel, you know, कुलदीप यादव, आंड्रे नॉट, खेलना पूरे इंटरनेशनल सीन है वहाँ पे, बस हर एक प्लेयर इंटरनेशनल है। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, चलो ठीक है, अब आए हैं ये लोग, तो अभिषेक शर्मा, एडन मार्कर क्लास, मयंक अग्रवाल, Marco Jansen, Washington Sundar, Bhuveshwar Kumar. When you compare these two on paper, you would say a Delhi team would anyway be better, but it's just on that day, जिसका intent, जिसकी नीयत, जिसका क्या बोल सकते, headspace ज़्यादा better है, he's gonna win. I think that's what it's all gonna be about. Team wise खेलना है, that's all. Just be a team, be a unit, play the game, man. That's all. That's all. 8 करोड़ का फ्रॉड हुआ है हमारे साथ, नहीं हुआ यार अभी तो 8 करोड़ का कोई फ्रॉड नहीं देखेंगे यार। इट्स गोना बी इन द, क्या ही बोल सकते हैं यार, अभी तो इट्स गोना बी समथिंग, आगे जाके लर्निंग है भाई, और कुछ नहीं। लेट्स जस्ट कीप इट एज लर्निंग्स, लेट्स जस्ट बी अ लिटिल बिट हम्बल। हाँ भाई अच्छी टीम थी, अच्छी टीम बेटर खेली और जीत गए, आगे जाके होपफुली वी कम बैक स्ट्रॉन्गर। दिल्ली ये नेक्स्ट ये मंडे से होपफुली वी गो ऑन अ विनिंग स्ट्रीक, 3-4 बैक टू बैक जीतना यार, 2-3 तो जीतना यार बैक टू बैक। आई नो इट्स हार्ड, I know it's tough to say, it's easy to say that, but tough to do. But let's see. Harry Brook has to come up 13.5 crores. Let's go, bro. We need you. We need this to happen right now. And he has to step up. Markram has to step up. A lot of people need to step up. We can't keep losing matches. And I think the Mumbai match we should have won easily, bro. Like, मुंबई का मैच अगर हम लोग जीत जाते तो क्या होता था। मयंक अग्रवाल से भी यार बहुत चिढ़ा रही, बट यार 8 करोड़ तो छोड़ दो यार, अब क्या ही कर सकते हैं, अपने पैसे थोड़ी है। बट यार बुरा तो लगता है। मुझे पता है एसआरएच कैसे जीती, कि काव्या को मिलने बोलो डिनर पे, बताता हूँ। हाँ हाँ, बस अब बस अभी बोल रहा हूँ मेरा स्पीड डायल पे है नहीं मेरे। काव्या डिनर पे नहीं आती जी, सीधा कैमरा पे हट बोल देंगे तुम्हारे को, चिराग भाई देख के, कैमरा वाले को जैसे हटो यार बोली ना, तुम्हारे को भी हटो बोल देंगे देख के। बट आई डोंट नो, आई मीन काव्या रहो नहीं रहो, फैक्ट तो है कि भाई we're not batting well, we're not bowling well, we're not doing anything well right now. We just need to pump in some positivity. Brian Lara needs to find some inspiration. मुरली की स्माइल, अब जरा मुरली स्माइल करके जरा गुस्से में आना जरूरी है, and Hyderabad really needs to do something about their batting, man, especially. क्या बात कर रहे हैं भाई मयंक, में उम्मीद है तुमको, हाफ सीजन हो गया, स्टिल यू फील प्ले ऑफ पॉसिबल है। उम्मीद पे दुनिया कायम है ब्रो, यू नेवर नो, यू कैन पुल आउट अ रैबिट आउट ऑफ हैट, यू कैन विन 5-5, राइट, दैट्स व्हाट सनराइजर्स हैव डन इन द पास्ट, विन 5-5 एंड एंटर द प्लेऑफ्स, राइट, कुछ भी पॉसिबल है क्रिकेट तो। बट आई मीन लेट्स सी, हट बोली तो हारते रहो फिर हाँ भाई यार, हट बोल के जीत गए तो फिर कंग्रेचुलेशन बोलेंगे क्या आप? But yeah, Mustafa bhai is a little bit busy today. You know, we both upset थे while watching the match. He was like, "This is the worst match I've seen in my life." Every match, every over that was passing, he's like, मस्करा बना कर रहे यार चेन्नई वाले, दे जस्ट वांट अस टू, वो बोलते ना ह्यूमिलिएट करके, बेइज्जत करके मार रहे थे कि भाई 135 इतना बड़ा स्कोर है बोल के, ऐसा लग रहा था। एंड भाई they could have finished it probably in the 12th over, 13th over, they just took it till the wire for no reason. राहुल त्रिपाठी को इंडिया से मौका मिल गया है तो एसआरएच को भूल गया, नहीं भाई, देखो अंशुल भाई, ये भी चीज है,
लोग यहाँ बोलते राहुल त्रिपाठी को इंडिया में जगह दो, इसको जगह मयंक अग्रवाल को खिलाओ। अब आप लोग बोलेंगे क्या बेस्ड ऑन दिस परफॉर्मेंसेज विल यू टेल मी कि मयंक अग्रवाल को इंडिया में खिलाओ, पृथ्वी शॉ को इंडिया में लाओ? द ओनली पर्सन दैट अब ये आप लोग बोलोगे प्रॉब्ली इज ऋतुराज गायकवाड बिकॉज वो परफॉर्म कर रहा है। उसके अलावा कोई यंग इंडियन आप बोल दो मेरे को, आई मीन होंगे, आई एम प्रीटी श्योर आई एम मिसिंग आउट ऑन समवन, बट वेंकटेश अय्यर होगा एक सेकंड वाला, वेरी क्लोज, बट यू विल नॉट आस्क मी टू ना। अब क्या होता है, राहुल त्रिपाठी परफॉर्म नहीं कर, नेक्स्ट 2 मैचों में राहुल त्रिपाठी और मयंक अग्रवाल अगर परफॉर्म कर दिया फिर बोलते हैं उसको मौका दो, द टीम इज कॉलिंग, सो दैट इज द थिंग। लोग बहुत ऐसा ऐसा चेंज हो जाते हैं, तो आई थिंक वो चीज जरा एडजस्ट करना पड़ता अपने को एज फैंस। Mayank needs some vada pav. Mayank needs a smash, like a punch, like a pav. You know, like he needs something, man. He really needs to do. Hopefully, SRH can find some Markram magic and he can use inspirational to more. He did try a lot. I'm not going to say he came the first match he failed, but in Kolkata he gave us inspiration. He accelerated the innings completely with Harry Brook, and he took up the problem of spin. So did Abhishek Sharma for Harry Brook. They were targeting the spinners. Harry Brook was targeting the fast bowlers. It's not just going to be an inspiration from Markram Ibrahim. It has to come from every player. It's not going to be possible. It's not. This team is not one of those where you can rely on a Markram, right? Markram is not that kind of a figure like a Virat Kohli, like not an ML Dhoni now. Maybe back in the day, I would say ML Dhoni. Maybe like a Devon Conway, a Rutraj, not a one-man show, not like a Faf can come in and play cross bat and give you sixes and 84 quick, 59, 60. ये टीम में नहीं है वैसे प्लेयर. Only Harry Brook is probably that, but Harry Brook is not as consistent as that lot, like a Rohit Sharma, like a Virat Kohli. Like you need a consistent star, right? And Fernandez need a collective thing. So for me, I think that's what I'm going to look at. And yeah, I hope he does find some inspiration. He has a good innings. I want him to play bat as well. But it's just going to be a collective thing. All players run a ball, no intent of scoring like Conway. Yeah, man, Conway is doing it. तो रनवे है उसका नाम, कॉनवे भी नहीं, खाली उड़ा रहा है यार और कुछ नहीं कर रहा है. Smash 20 of Marco Jansen, man, that was nothing, piece of cake for him. And he's 360, man. No one like he plays hook, he plays pull, he plays drives, he plays sublime shots, man. That guy is something else right now. हैरी ब्रुक की प्रॉब्लम क्या हो रही है, बैट मिडल हो रही है, कुछ शॉट गुड़े मारता है इनिंग्स में पर बर्ड नहीं कर पा रहा, इनिंग्स बढ़ा नहीं पा. हैरी ब्रुक का प्रॉब्लम is was spin initially, but I also think that it's just his natural way. He doesn't like to, उन्हें अपने जो नेचुरल गेम को है उसको ज्यादा कुछ चेंज करना नहीं चाहता अंशुल भाई. आई थिंक दैट्स व्हाट्स विद हिम. मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा खेलूंगा, मारूंगा मारूंगा, नहीं मारूंगा चलेगा. वो इंग्लैंड मेंटालिटी है, वो क्या बोल सकते हैं उसको, दैट्स बेसबॉल का टेक्निक है. वो चलता, अगर चला तो भाई टू मच है, नहीं चला तो उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता. एटलीस्ट दे आर नॉट वेस्टिंग बॉल्स बोल के रहता कि भाई हम बॉल्स तो नहीं खा पा रहे. अब आप what would you rather have? You would have Harry Brook scoring 15 of 5 balls or a Rahul Tripathi scoring 21 of 20 balls, right? तो आप 15 of 5 balls अगर आप मार रहे हैं हैरी ब्रुक, you're saving me 21 ball, 16 ball आप मेरे को बचा रहे when you compare it to a Rahul Tripathi, and 16 ball is like almost 2.5 2.4 overs, so that I'd rather take that, right? So that's how you're looking at it. तो इन लोगों के हिसाब से 2.5 ओवर अगर मेरे बच रहे तो yeah, I wouldn't mind Harry Brook going like that, but he needs to be consistently at least giving me 25 to 30 runs. भाई अभी तक इतना इस सवाल हुआ है मुझे, तिलक वर्मा सबसे या तिलक वर्मा also one other, बट ये है गजू भाई, ये 2-3 परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे आप इंडिया का टिकट नहीं दे सकते ना. आप इंडियन क्रिकेट टीम पे जब आते हैं यू हैव टू बी मोर कंसिस्टेंट. ये एक आध परफॉर्म, तिलक वर्मा को आप इंडिया भेज दोगे, वो नहीं परफॉर्म करेगा, फिर उसको हका लोगे, फिर आप बोलोगे नहीं उसको लेके आओ. तो इट्स नॉट गोना बी लाइक, इतना नहीं होता ना. इट्स नॉट लाइक अ शॉप के अपन जाते भाई ये जूता बता दो, नहीं जूता नहीं परफॉर्म करा, वो जूता ला लो. You need to be more consistent. And India, I think Rutraj is the only one for me. Maybe Venkatesh Iyer and Tilak Verma, but amongst these guys, I would say Rutraj. Someone needs to tell Mayank खाली fit नहीं होना होता, बैटिंग अच्छी भी करना होता है. या उन्हें क्या की फिटनेस, कौन है उसका फिटनेस कोच, मेरे से बात कराओ यार, मैं बात करके उसको जरा टिप्स देता हूँ. बिकॉज फिट हो गया चलो ठीक है, फिर भी आप स्लो कैसा खेल रहे. लाइक यू आर हियर टू प्ले 20-20 मैन. You're not here to play a 50-50. You're here to play 20-20. You're not here to show people that you're supposed to get into the Indian cricket team. You're here to show them that you're here for Sunrisers Hyderabad. And yeah, somewhere down the line it's more than fitness. It's about batting skill and technique and pressure situations. Kawhi became CEO in 2020 season, and we know what happened with SRH after everything changed. Players, staff, coaches definitely manage. 100% management is going to be a concern. Management calls on in auctions have been concerning as well. They've let go of a lot of good players.
I would still say, like, see, I mean, Kane Williamson, Rashid Khan. Kane Williamson is all right. Rashid Khan was very upsetting for me, but Rashid Khan also wanted to go. Apparently, what I've heard in recent times, David Warner ko jo kare, it's probably karma. Maybe I don't know, something coming after you, back at you, So I mean, management will be there, but again, boss, like जो players है अभी भी, चलो भाई, management खराब है. आप एक ऑफिस में काम करें, मैनेजमेंट खराब है, आप क्या करते? आपको पगार तो चाहिए, पगार आपको चाहिए, आपको काम तो करना पड़ता. So you can't, आपको, you want to be in that 11, so you've got at least work, at least till that you work individually. Screw the management, man. Now you guys 16, 15, जो भी 25, 20 की यूनिट जो भी है, आप लोग साथ में रहो भाई. आप मैनेजमेंट को छोड़ दो. आप लोग को दे दिए ना भाई, किट्स विट्स जर्सी सब दे दिए. अब आप खेल लो, खत्म करो बात. And fans like you and me should raise the issue rather than still. No one's defending the management. The thing is, like, we've raised it so much. Like, the auction tactics have been off very often. I don't even know who sits in the auction, man. Half the time it's just Kavya talking on another guy on a phone, who then tells कि भाई आप पैडल उठाओ या नहीं. So that's also what's irritating me. जो टेबल पे ऑनलाइन डिसाइड करना, थर्ड पार्टी को, आधे टाइम मैंने पैडल होल्ड करा के रखती कि भाई रुक जाओ, मैं फोन पे हूँ. So मेरे को तो वो भी इरिटेटिंग दिखता, but it's gonna be a, अब है जो प्लेयर्स आप यूज करो भाई. अब जो यूनिट है, आप वो लोगों को भी आप ब्लेम करना ना. रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, साई सुदर्शन was good. Rinku Singh, no doubt, he's hit 5 6s. But he's again custom. Nitish Rana also was good. He's good with the bat and ball. So there are a lot of people in this pool, punter. But again, it's just, when they come to an Indian team, you see what happened to Deepak Huda. You see what happened to Mayank Agarwal. You see what happened to Prithvi Shaw. You see what happened to Vijay Shankar. अभी सब अच्छे दिखते हैं बॉस, सब अच्छे दिखते हैं. थोड़ा आप इंडिया लेके जाओ, थोड़ा टूर पे लेके जाओ, फिर देखो पैगन में वो एक चेक मिलते कि लाइट हो जाते पूरे. आई मीन, आई एम नॉट चेक बेसिस, बट आई एम जस्ट सेइंग दे डोंट परफॉर्म दैट वेल. इंडिया को फिर कोई फास्ट बॉलर नहीं मिल रहा है आईपीएल से. या अभी इंजरीज भी इतने हैं ना भाई. मोहसिन खान को भी इंजरी थी, उसको भी इंजरी थी, तो इंजरीज थे. बट लाइक, उमरान मलिक है. अभी अविनाश सिंह को देखने का है. हर्षल पटेल को तो देख लिए आप. हर्षल पटेल से तो कोई उम्मीद नहीं है मेरे को अभी. दिस गाय युद्धवीर सिंह इन लखनऊ इज वन गाय हुज इम्प्रेस्ड मी. अच्छा पेस है उसका. आई नो ही इज बीन स्मैश्ड अ बिट, बट युद्धवीर सिंह वाज नॉट बैड फ्रॉम लखनऊ सुपर जायंट्स. उमरान है, युद्धवीर है, शामी अभी भी अच्छा डाल रहा है. बट या फाइंडिंग फास्ट बॉलर्स की अगर आप बात करें तो उतना नहीं आया. मोहित शर्मा इज बैक इन एक्शन. आई एम हैप्पी टू सी मोहित शर्मा एज वेल. दीपक चार इंजर्ड है तो पुली नहीं दिखा, but ये मंजे हुए हैं. So yeah, but Mohit Sharma was a delight to watch the other day. Not able to finish his quota, but it was good redemption. भाई मयंक फिट कम बीमार ज्यादा लग रहा है. वो क्या बोलते मालूम, वो डाइट को के, एक होता है आप क्वांटिटीज कम कर देते चीजों के. एक होता है आप खाली चावल छोड़ के, आप दिन भर इडली खा, चावल छोड़ के आप ऐसे डाइट पे चले आ रहे कि आप एक टाइम खाना खा रहे हैं, तो हैगर्ड दिखता है. आप तो थोड़ा आपकी बॉडी वेट कम हो जाती, पानी कम हो जाता. लेकिन आप, आई डोंट नो उन्होंने क्या कर लिया कि उन्हें घर में कोई डाइट लिख के दे दिया शायद उसको. ये सीएसके हल्लो हल्लो टेबल क्लाइम कर लेगी फिर सीधा फाइनल. पता नहीं कैसे जीत रही है. इनका बॉलिंग बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड है. धोनी ब्रो, दैट्स हाउ इट इज. आई मीन, अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट एग्री विद मी, बट धोनी भाई बहुत स्ट्रिक्ट दिखता है मेरे को. एंड ही रिक्वायर्स डिसिप्लिन. एज लॉन्ग एज अ बॉलर नोस हाउ टू बॉल एंड इफ ही जस्ट डिसिप्लिन, दैट्स व्हाट धोनी प्रोबब्ली बिलीव्स कि डिसिप्लिन से आप मार सकते हैं कोई भी. आप देख लो भाई, आकाश सिंह वाज गेटिंग स्मैश 40 रन्स टुडे, ही जस्ट गिव 17 रन्स ऑन अ स्पिनिंग ट्रैक. तुषार पांडे was getting 48 runs smash today, he gave only 26 runs. Theekshana को सीधा कर दिया भाई, 4 overs 27. Pati Ratna 22 runs. So discipline is what Dhoni wants, and they're already third. Qualifier and eliminator is in Chennai, just Ibrahim Bhai told us. But yeah, I mean, CSK, Dhoni will demand, man, demand. When your captain is demanding and it's someone like ML Dhoni, you have to do the work. I think that's all. There's no ifs or buts, or you're out of that team. एंड उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता भाई. वही आप जब जिम्मेदारी देते किसी बच्चे को कि ये करके दो तो तुम्हारे को ये मिलेगा, तब उन्हें जरा चैलेंज फील करता है. एंड दैट्स वेयर यू सी द बेस्ट ऑफ हिम. सिराज इज बॉलिंग द बेस्ट, मैन. सिराज इज वन ऑफ द बेस्ट पावर प्ले बॉलर्स राइट नाउ. सिराज इज हैविंग ऑल द वेरिएशंस इन हिम. एंड दैट 4 wicket spell against Punjab, he won them the game. वरना पंजाब could have come. पंजाब I think थोड़ा टीम का भी इशू हो गया था सिलेक्शन. लिविंगस्टोन probably could have waited and not started, and like it could have been Sikandar Raza, but obviously hindsight is the best place to be in this world where you can feel that everything is lost over. Arshdeep will not bad either. Arshdeep, yeah. So a lot of bowlers are coming up, but नए bowlers की अगर अपन बात करें पंटर, Yudhvir was one who just grabbed my eye, and yeah, I don't remember anyone else that. Umesh Yadav has lost on our. Umesh Yadav never good with white ball. I don't know उसको गाय को वो ज्यादा करे, but it's been good.
ये देखो हमारे भाई यहाँ हारा हुआ मुंह लेके आ रहे. भाई अभी भी लाइव है, क्या बात है, व्हाट्सअप बेबी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक. वेरी poor performance today with the bat, with the ball, but we'll be back on Monday. Going Rajiv Gandhi, baby. Yeah. Hafiz. On Monday, Mustafa is going to be extra anxious. Obviously, Delhi Capitals is coming, and then again, there's going to be a double header because we're going to play them on Monday, and then the next week again we're playing them in Delhi. Delhi Capitals, yeah, we're playing them again. मगर आज यारो बहुत पिंडे का गेम था, ना बॉलिंग चली ना बैटिंग चली. उन्हें 7वां ओवर तक खाली फास्ट बॉलर्स चला रहा था, like Marco Jansen पिट गया. He gave him a third over for no reason. I didn't understand that. We don't have the spinners of their quality. उन लोग तीनों स्पिनर आके फंसा दिया हमारे को. We were 20 runs short, and then with the ball, no intent, सुला दिया रो चेन्नई. But we should have done much better, man. Bat and ball बहुत बेकार था. Yeah, I mean, if you're looking at the performances, batting more culprit for you or bowling? Both, but more probably batting because 20 runs तो short थे. कॉन्वे देखो कैसा बैटिंग कर रहा था, उन्हें कैसा बैटिंग कर रहा था गायकवाड, तो बैटिंग बहुत बेकार थी. बॉलिंग वाइज भी यार उन्हें स्पिनर ही नहीं है, और थे तीन. आई थिंक मार्करम थोड़ा पिट गया तो ही डिडंट गेट द अदर स्पिनर्स ऑन. आई थॉट यू शुड हैव केप्ट अटैकिंग. फास्ट बॉलर्स को दला के कोई फायदा नहीं था. ये पिच पे देखो धोनी कैसा कराया, तीनों को स्पिनर्स को नॉन स्टॉप कराया उन्हें. Quick word. Keeping Marco Jansen in the team, smart move, or Akil Hussain or Rashid should have been. Rashid should have played today, considering the conditions. But then Marco gives you something with the bat and that extra bounce. So maybe Akil can bat, no? Akil can bat, but yeah, I think you should have gone with extra spinner. That's 100%. मगर भाई आप ऐसा बैटिंग करें तो आप 4-10 स्पिनर खिला दो, आप नहीं डिफेंड करेंगे. It's going to be impossible. You have to put pressure on Chennai. इतनी बैटिंग थी उन लोग की, उन लोग 160 भी चेस कर देते थे. We had to get 180 on this pitch. I know it's a slow pitch, but it's the same pitch where there was 200 scored in like a few weeks ago, I think. So they should have been able to score at least 170, 180. Yeah, 100%. If captaincy is art, then Dhoni is artist. He always creates. Exactly, Dhoni, he gives responsibility, he gives time, he gives everything, and that belief to the younger generation. And he, like Mustafa, also admits to this fact. He's already said this in the fact that Dhoni makes a player out of someone. उन्हें अब देख लो, जिनके आने को ही देख लो आप, he will nowhere to be seen. Robin Ottawa will nowhere to be seen. Ambati Rayudu will nowhere to be seen. But he took these guys and he made something. He gave them hope and belief. And भाई उन्हें आर्ट है भाई, आर्टिस्ट ने, और उन्हें ही आर्ट है भाई. धोनी इज लाइक समथिंग एल्स मैन. आई डोंट नो व्हाट. देश पांडे कैसा है, थोड़ा छोटा है देश पांडे, एंड थोड़ा हैबती है मेरे हिसाब से. आई थिंक इज टेंशन. इफ ही गोस टू एनी अदर टीम right now, in my opinion, he'll get smashed because he doesn't have the क्या बोलते, mental strength to withstand this pressure. But it's just Dhoni has given him so much confidence in that standing behind the stumps is what I personally feel. Because आप जब first over या second match उसका second match या first match का second या first over आप देखो, 18 रन दे देता उन्हें, हैबत में वाइडा फेंक देता उसको, आके 3-4 लोग बात करते उससे, 3-4 बात करते उससे लोग. ही इज आई थिंक हैबत ही है थोड़ा. बट या धोनी हैज रियली काम्ड हिम ओवर द डेज. नेट्स में जो बात चलती है एंड स्टफ लाइक दैट. मलिंगा डुप्लीकेट भी कोई है यार, मैं भूल गया. पथिरत्ना ही ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पथिरत्ना और समवन, नहीं पथिरत्ना, आई डोंट रिमेंबर हु द डुप्लीकेट इज, मैन, आई फॉरगॉट हिज नेम. बट या Umran needs to work. Yes, Umran needs to work. Quality batsmen do play him easily. आराम से भाई, उसको थोड़ा हाइट दे दिया तो ना, खाली ना लगा देते उसको, या उसको हुक कर देते. So Umran needs to work on his line and length. He needs to know when to bowl full and Yorker and stuff like that. So मेरे हिसाब से Umran really needs to work on his bowling. He just needs to know that yes, you have pace, but pace is always not gonna translate into wickets. Look at Norghe, the way he bowls, right? Yorkers, classic quality Yorkers, and the way he saves runs in the final overs, that over against Mumbai Indians. आप देख लो तो it's not always going to translate. And Shoaib Akhtar was the fastest bowler at one time, but he never used to get he used to get wicket, but he also had to maintain his line and length. It's not always about just pace and you're going to get wickets. Sean Tate used to have pace, but we've seen what he was too wayward. SRH को अब यही भी नहीं पता है कि अब होम ग्राउंड में कैसी पिच बनेंगे, वरना स्पिन पे भी गए फास्ट. एग्जैक्टली. एंड अंशुभाई सही बात है, ये हैदराबाद की विकेट थोड़ी क्या बोल सकता है, अनप्रिडिक्टेबल है. कभी आपको स्पिन मिल जाता, कभी स्विंग मिल जाता, कभी बाउंस. सो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग कि ऑन दैट डे क्या करते हैं. बट एट होम जनरली द एटमॉस्फेयर इज वेरी गुड. मैं ये बोलूंगा, बिकॉज हम लोग स्टेडियम गए, इट्स मच मोर सपोर्टिव. And Delhi आ रही, तो I don't think anyone is going to be supporting Delhi that much.
but it's going to be a much better atmosphere for Sunrisers to play. And I know we lost to Mumbai at home, Mumbai as well, but again it was a close match. We lost because of mistakes, we didn't lose because of the fact that pitch नहीं समझ में आया या टीम सिलेक्शन गलत थी या वगैरह वगैरह. आज प्योर बेसिस ये बोल सकते हैं कि one of the reasons was team selection not correct, second would be the batsman not showing up, and third was Marco Jansen's over. So a lot of homework to be done. And yeah, we move on to Monday. Tomorrow join kariye mujhe aur Mustafa ko for double header on the match 30, match 31, Lucknow Super Giants, KL Rahul versus Hardik Pandya. Strike rate versus क्या बोल सकते, strike rate के बारे में बात करेंगे KL Rahul के, because there is nothing there that he's doing to change it or improve it. He's sticking to his morals of going against strike rate. And then you've got Mumbai Indians versus the Punjab Kings, which is also a very feisty affair. Mumbai Indians coming back from the dead, जहाँ पे लोग बोल रहे थे कि उन लोगों की bowling नहीं है, and potentially they were out of the tournament. But Arjun Tendulkar has come in as something else. For the Mumbai Indians and Punjab Kings, that they have a little bit of work to do. Shikhar Dhawan going to be back. उसकी injury ठीक हो गई नहीं हो गई उसके बारे में बात करते हैं. Yes, Eid Mubarak punter and everybody through the stream, Eid Mubarak. And yeah, hopefully we join you tomorrow, and everyone take care till then, and please do like, subscribe and share with all of your friends, and see you tomorrow for the review for Gujarat Titans versus Lucknow Super Giants. Till then, good night, and yeah, Eid Mubarak, and thank you.